And here we go with the first problem. Let A be a 3 cross 2 matrix, and this bracket S means having entries from set S. Similarly, B is 2 cross 3 entries from set S, where set S is given by -1 0. Now T is another set containing ordered pair of matrix AB such that data of AB equals 0. You have to find cardinality of set T. So one way of doing this question is directly we'll randomly take, let's say, any 3 cross 2 matrix. So let's see if I take 3 rows and 2 columns, A, B, C, D, E, F. And let's multiply with 2 cross 3. It means 2 rows and 3 columns. So G, H, I, J, K, L. So what we expect? You can clearly see if we multiply, we are going to see we'll get AG plus BJ. Next CG plus DJ. Next is EG plus FJ. Right? So if you multiply, we have this matrix in hand. Now the question is we have to find data of this given matrix. Okay. Now one way of doing this blindly will be just to explain this, but that's going to be of little length. All the things will cancel, and we expect some answer. So once we expect some answer, there we can play with the permutation of -1 0 1, because all these entry from A to L, right, that belongs to the set S. Now, is there any faster way of calculating this determinant? Of course, yes. And the motivation comes from here. You see, we have terms like AB, AB, and AB. So that reminds us as if this determinant can be written as product of two determinants. Or you can make this as product of two matrices of same order, let's say 3 cross 3 and 3 cross 3. And then we can multiply them maybe to restore this. So with this motivation, what we can write? We want AB, AB, AB to be on our first row. Because how we multiply matrices, it's row by column. That you can multiply in any way. That you can multiply row column, column row, row row, or column column. अब ऐसा आप इसलिए कर सकते हो because that of A is same as that of transpose. So for first matrix you take transpose and then multiply matrix wise. That will be equivalent to multiplying column with row, and so on and so forth, right? Okay. So now how to create GJ, HK and IL? So that's not very difficult, because when first guy will get multiplied with GJ, it will create the first term. Similarly, it will get multiplied with HK as well as it will multiply with IL. Similarly, as you can clearly see, for the second guy, what we are having, so we have again CGDI, so we have GI, here again we have CHK and we have C and D. So second we can check, we have CH and DK, CH and it's not HK, it's DK. So we have again C and D common from both of them, right? So that's get motivation of putting C and D. Similarly we have EF, EF, EF. It's like we are trying to find unity and diversity. अब देखो, आप अगर इसको फंडामेंटली मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर गेटिंग टर्म्स लाइक दैट, बट स्टिल वी डोंट नो व्हाट आर दिस डॉट्स. ओके, वी हैव टू कीप जीरो. Similarly, JJ, if you will keep non-zero over here, you can see there will be ambiguity because all terms will not be restored, because here again at least 1 0 you want, you 1 0 1, because we have only two structure EH and FK, but we know when you multiply 3 cross 3 it will produce three terms like EH, FK and something. So we don't have an option. आप 0 0 0 रख सकते हो. Anyway, मीन्स एटलीस्ट 1 0 तो आपको रखना ही होगा, मतलब एक कम्प्लीटली एक रो को 0 बनाना होगा या फिर एक कॉलम को. अब यहाँ पे नॉन जीरो भी रख सकते हो, सोचो क्यों. अगर हम नॉन जीरो रखेंगे तो वेदर आंसर विल कम और नॉट, दैट यू थिंक. ठीक है, वैसे वेदर यू कीप नॉन जीरो और जीरो ओवर हियर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ
ठीक है ना, जैसे अब इसको आप देख सकते हो, इफ आई दिस विल गेट मल्टीप्लाई दिस एंड विद दिस एंड दिस, सो वी आर गोइंग टू रिस्टोर ऑल द टर्म. सो एनीवे इसका आंसर 0 आ गया. Okay, so that's very surprising, like the product of AB is always 0 identically. ठीक है, तो अब यहाँ से what will be the answer for the cardinality of this set? A can be any 3 cross 2 matrix. So 3 cross 2 matrix में we'll have 3 choice over here, 3 choice over here, so 6 choice. So 3 का power 6 choice for A, and we have similarly 3 का power 6 independent choice for B. So total answer is 3 का power 12 is the cardinality of this set. There is one similar problem which you can try, and this is literally little bit technical. For example, in the same question, if A is 3 cross 2, and let's say from some real world, and B is 2 cross 3 matrix again from real world, and now if it is known AB product, okay, so let's say for some matrix A and B such, if AB product is 8 2 minus 2 2 5 4 minus 2 4 and 5, then we have to calculate the det value of BA. अब ये अच्छा क्वेश्चन है. द फर्स्ट थिंग AB प्रोडक्ट, फिर आपको पता है det ऑफ AB ये 0 होना ही चाहिए. ठीक है, तो इनफैक्ट इफ यू विल चेक det ऑफ दिस इट विल बी 0, अदरवाइज द माई प्रॉब्लम इट सेल्फ विल बी रॉन्ग. ठीक है, सो इनफैक्ट इट्स 0. तो अब det ऑफ BA कैसे निकालोगे? वन वे इज यू टेक A एज रैंडम, 3 cross 2 and 2 cross 3, फिर इसको कंपेयर करो, then you'll have so many unknowns, and by comparing you can get the value and then try BA which will be basically 2 cross 2 matrix. लेकिन अब ये तो एक्सट्रीमली लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैली हैमिल्टन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो कैली हैमिल्टन का यूज़ करके थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल द मैट्रिक्स BA एज सम मैट्रिक्स X. So if I use Kelly Hamilton on BA, what I'll get? We'll get x square minus trace of x times x plus det of x times I, of course of order 2, is in null matrix. अब यहाँ से if I take trace on both sides, so trace of x square, right, minus trace of x, yeah, times x plus trace of det of x times I will be trace of 0, and trace of 0 is 0, so it will become a scalar equation because trace will be a number. अब trace of x square क्या होगा? अब ये आपको पता है, इसको सपोज trace of x square ही लिखने देते हैं. अब trace of x is a number, so trace of 5x, I can take 5 out, so it will become trace of x whole square. Clear? Next is what is trace of 5i, so it will be 25, right? So basically यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ, सपोज इफ आई में det ऑफ x इज गेट मल्टीप्लाइड, सो 2 टाइम्स ऑफ वो मेरा ट्रेस आ जाएगा यहाँ से. सो ट्रेस ऑफ det ऑफ x इंटू आई इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ det ऑफ x इक्वल्स 0. तो अब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, det ऑफ x फाइंड करना है. ठीक, बिकॉज det ऑफ x इज that ऑफ BA. तो उसके लिए जस्ट आई नीड टू फाइंड ट्रेस ऑफ x स्क्वायर एंड ट्रेस ऑफ x होल स्क्वायर. अब व्हाट इज ट्रेस ऑफ x स्क्वायर? देखो ट्रेस ऑफ x स्क्वायर कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ x इज BA. क्लियर? बट आई नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ ट्रेस, अब हम BA को आगे भी लिख सकते हैं, because it's like x into y is same as y into x, so this can be written as trace of, if I'll write again BA, so it will be basically same thing. Okay, so how we can change it by commutativity? So let's say if I take now, instead of this, B as one matrix and AB as another matrix, so this can be written as trace of Golu into Bolu, so trace of Bolu times Golu. And now you can clearly see it's nothing but trace of, again I can associate AB and AB together, so trace of AB times AB, which is trace of AB square. And that's interesting because now we know trace of x square is nothing but trace of AB whole square, and trace of x is trace of AB. ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
क्योंकि ए बी मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन, राइट? इफ ए बी मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन तो ए बी स्क्वायर आप कैलकुलेट करो तो कितना आ गया. लेट्स डू है, इफ विल टेक ए बी स्क्वायर हेयर, यू कैन सी इट्स गोइंग टू बी 9 ए बी. आप ये खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? तो ए बी स्क्वायर इज 9 टाइम्स ऑफ दिस. नाउ व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए बी? Trace of AB is going to be 18, right? Because 8 plus 5 plus 5. So what is trace of AB whole square? So it's 9 is multiplied by everywhere. So 9 times 18. So we know both value. So in this equation, trace of x square is basically 9 times of 18 minus trace of x square is 18 whole square plus 2 times of that of x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बन गया है 2 टाइम्स ऑफ डेटा ऑफ एक्स इक्वल्स 18 स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स 9. 18 कॉमन लो, 18 इंटू 9 आ गया. सो डेटा ऑफ एक्स इज 9 स्क्वायर विच इज 80. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम. और ये देखो कितना बेहतरीन प्रॉब्लम था, वेयर इंस्टेड ऑफ टेकिंग यू नो लाइक ऑल 6 and 6 12 वेरिएबल्स वी हैव डन इज इन अ वेरी नाइसर वे. तो आप ऐसे इस प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हो. अब ये सिमिलर प्रॉब्लम ब्लैक बुक में नहीं था, क्योंकि आप देखो ये जो फर्स्ट पार्ट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, इसका एक सिमिलर प्रॉब्लम ब्लैक बुक में है, विकास गुप्ता सर के बुक में, जिसमें डेट ऑफ ए बी दिया हुआ है 4 शायद, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेट ऑफ बी, एंड ए बी इज अगेन 2x3 एंड 3x2 मैट्रिक्स. तो उसका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा. अब ऑफकोर्स जेई वाला ऐसा नहीं पूछेगा, जेई वाला थोड़ा फैंसीफुल फॉर्म में द वे आई हैव रिप्रेजेंटेड ऐसा पूछ सकता है. द सेकेंड क्वेश्चन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माई बुक, जहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब ब्यूटी दोनों प्रॉब्लम का क्या है, जो अगर सपोज इफ आई हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी एंड इफ आई आस्क यू इज इट पॉसिबल इन जनरल टू राइट दैट ऑफ ए बी इज दैट ऑफ बी ए, नाउ द आंसर इज क्लियरली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अभी आप जस्ट देख रहे हो दैट ऑफ ए बी जो था ऊपर वाले पिक्चर में वो 0 आ रहा था सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, एंड दैट ऑफ बी ए जो है वो क्लियरली 81 आ रहा है. तो दोनों तो इक्वल यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? सो अंडर व्हाट के कंडीशन दे विल बी इक्वल, क्योंकि आपके कोचिंग मटेरियल्स में ये लिखा रहता है दैट ऑफ ए बी इज दैट ऑफ ए टाइम्स दैट ऑफ बी, एंड दैट ऑफ बी इज ऑल्सो दैट ऑफ बी टाइम्स दैट ऑफ ए, सिंस इज अ नंबर सो दैट ऑफ ए बी इज इक्वल टू दैट ऑफ बी. अब इन जनरल ये गलत स्टेटमेंट है, बट इट विल बी ट्रू अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? इज ट्रू जब दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब तो ये पक्का गारंटीड होगा. अदर केस में भी हो सकता है, लेकिन so it is true when both of them is a square matrix. Okay, तो एक possibility है when this will always be true when 3x3 3x3 और 2x2 2x2 है. So if both matrix A and B is of order n, means n cross n order का है, then definitely you can tell like that of AB and that of BA EB. और फिर trace के बारे में क्या है? trace of AB again and again in every lecture I am telling same as trace of B. In fact trace of ABC can also be written as trace of A times BC. अब फिर बाई कम्यूटेटिव लॉ इसको हम BCA लिख सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आपको हर एक चैप्टर में ऐसे ही इफेक्टिव प्रॉब्लम्स अभी जे एडवांस तक सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं. यहाँ पे आपको मैं हाई क्वालिटी कंटेंट मटेरियल दूंगा जो कि कोई भी टेक्स्ट बुक में यूजुअली अवेलेबल नहीं है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड डे.